हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। इस लेक्चर में हम एक रिजल्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट, इसका प्रूफ लिखेंगे और देखेंगे कि कैसे इस प्रूफ को फ्रेम किया गया है, कैसे चीजों को प्रूव करी गई है कि फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस ऑन अ क्लोज इंटरवल इज आल्सो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन दैट इंटरवल। हमें पता है कि एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन जनरल यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, बट इफ अ फंक्शन डिफाइंड ऑन अ क्लोज इंटरवल एंड इट इज continuous throughout that interval, that function will be definitely uniform continuous in that interval। तो अगर हमको एक फंक्शन दिया हुआ है और वो क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है, तो हमें केवल केवल हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। अगर वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। ओके, तो लेट अस सी कि कैसे इस रिजल्ट का प्रूफ लिखेंगे। थोड़ा कंस्ट्रक्टिव प्रूफ है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा और वन बाय स्टेप बाय स्टेप आप नोट करते रहिएगा ताकि उस प्रूफ को आप आसानी से कर पाए एग्जाम्स के अंदर। ओके, तो लेट्स राइट स्टार्टिंग राइटिंग द प्रूफ। तो समझ गए रिजल्ट क्या कह रहा है? इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन अ क्लोज इंटरवल, दैट फंक्शन डेफिनेटली यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। ओके, सो व्हाट वी हैव अ फंक्शन व्हिच इज कॉन्टिन्यूअस इन अ क्लोज इंटरवल। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है और उस इंफॉर्मेशन के यूज करके वी विल प्रूव कि दैट इज आल्सो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। ओके, so let's start. So I'm just taking a function. So let, and when you are writing any proof in your textbook from here, you just write each and every term they are used there। okay, जो भी है बहुत शार्ट करने, क्योंकि जब आप एग्जाम्स में अपेयर होते हैं तब आप जब क्वेश्चन को शार्ट में लिख देते हैं तो वो आपके मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए प्रॉपर प्रूफ लिखना होता है ना। हर एक टर्मिनोलॉजी जो हमने यूज करा, जो हमको प्रोसेस है, जो मेथड्स हैं, जो स्टेप्स हैं, वो सारे हमें क्लियर मेंशन करने होते हैं। तो इसलिए आप जब प्रूफ लिखें तो बहुत शार्ट में करने की कोशिश ना करें। ओके, क्योंकि वो एक फाउंडेशन बिल्ड हो रही होती है मैथमेटिक्स की, तो इसलिए प्रॉपर तरीके से इसको करें। तो वी आर स्टार्टिंग टू लेटिंग अ फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस in a closed interval a comma b, whatever is just taking interval। okay, so let a function f be continuous on a closed interval I। okay, okay, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि फंक्शन हमारा यूसी नहीं, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं। अगर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इट मींस वी हैव टू पॉइंट्स, take x1 and x2, because for every point the mod of fx1 minus fx2 is less than epsilon hota tha। if function is not used, it means we have 2 points x1 x2, at least 2 points x1 x2, such that mod of x1 minus x2 is less than delta, but mod of fx1 minus fx2 is not less than epsilon। ओके, तो वो कंडीशन को फिर रिवर्ट करेगा, है ना। तो if there was for all, तो इट मीन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट ऐसा होगा जो कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, तभी तो हम उसको बोलेंगे कि वो यूसी है, वो यूसी नहीं है। ओके, तो लेट इट पॉसिबल, लेट इट पॉसिबल एफ बी नॉट इनफॉर्मली कंटिन्यूअस on I। okay, then there exist 2 points exists an epsilon such that we have a delta is not fulfilling the condition, such that for any delta
there are 2 points. Numbers. I'm just saying this is x and y belonging to phi, for which this is mod of fx minus fy is not less than del epsilon when this is less than, कोई भी आप डेल्टा क्यों नहीं ले लो, उसके लिए वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। ओके, तो क्योंकि हमने क्या बोला है कि फंक्शन हमारा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो हम ये कंडीशन हमारे पास मिल रही है। ओके, तो लेट अस सी कि क्या हमारे पास, तो आगे हम क्या देख सकते हैं। तो एंड जस्ट टेकिंग इन पार्टिकुलर ऑन दिस टाइम particular for each positive integer we can able to find some real number. We are constructing a sequence, हम sequence बनाने वाले, if we can find real numbers, this is your x n and y. I'm just taking two sequences in. तो जो भी इंटरवल होगा उसके अंदर हम दो सीक्वेंसेस कंस्ट्रक्ट करेंगे। फॉर एवरी पॉजिटिविटी, फॉर एवरी नेचुरल नंबर वी कैन एबल टू फाइंड सम रियल नंबर्स इन दिस इंटरवल आई, such that we can able to construct two sequences xn and yn. Okay, so and that also not fulfilling this condition, है ना, वही कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि दिस विल बी हैव दिस कंडीशन नॉट फुलफिलिंग, दिस इज x minus f of yn is not less than epsilon when this is xn minus yn is less than 1. So I'm just mentioning this results equation 1. Okay. तो हम क्या कह रहे हैं कि for every positive integer we are not we can find natural number x1 x2 such that if you are just taking delta, है ना, फॉर एवरी डेल्टा वी कैन एबल टू फाइंड सच एक्स एंड वाई। अगर हम कुछ भी डेल्टा लेते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई तो हमको मिल ही जाएगा, तो 1/n के हिसाब से अगर हम करें तो वी कैन एबल टू कंस्ट्रक्ट एक्स एंड वाई एन इन सच अ वे विथ फुलफिलिंग दिस कंडीशन। ओके, ओके, सो वेरी, यहाँ पर एक वीडियो हमारा जरूर चला था, जैसे कि करना, I'm sharing the screen to you. ओके, तो ये हमारे पास कंडीशन है फॉर एवरी पॉजिटिव, ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल करेगी। इस चीज को समझिएगा कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इफ देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन such that for any delta there exists x1 x2 in this such that this will not satisfy this condition in that fx minus fy is not less than epsilon when this x minus y is less than delta। तो अगर हम वन हमने यहाँ पर लिया और सच इंटरवल हमने कोई भी लिया, तो दैट इज इफ आई एम चूजिंग एप्सिलॉन इन अ सच अ वे दिस इज 1/n। ओके, अगर हमने n बराबर 1 पुट करा तो दैट इज 1, n बराबर 2 पुट करा तो 1/2, n बराबर 3 पुट करा, तो इस तरीके से हमने एप्सिलॉन लिया, तो उस एप्सिलॉन के लिए हमको पेयर्स मिल जाएंगे x कामा y, है ना, जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे बिकॉज देयर देयर इज फॉर एनी एप्सिलॉन।
they are written here now for any epsilon, sorry, for any delta, है ना, for any delta this condition will be there because we are taking the function is not uniformly continuous. Okay, तो इसका मतलब है कि अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n लेते हैं उसके लिए हम कुछ इस तरीके हम इस xn और yn रियल नंबर ढूंढ लेंगे जो इस तरीके कंडीशन को फुलफिल करते हैं. ओके, तो if I'm using delta as a 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, and in such a way, so we can able to find x, y, x1, y1, x2, y2, x3, y3 in such a way. तो हमें ये कंडीशन हमारी दिखनी है. तो हमने क्या करा कि we have this condition for not uniformly continuous. We able to construct some sequences x and y and in a such a way. Okay, अब उस सीक्वेंस को लेकर देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. लेट अस, so now we have sequences xn and yn, so you can just have now we have sequences xn and yn being sequences in the closed interval I. And obviously we are taking this x and y1 from this I, so it will be definitely it is a bounded, है ना, so they are bounded, you can say they are bounded. They are bounded and so each has uh, at least one limit point, है ना. वो जानो डिस्ट्रास थ्योरम वो यही कहती है कि if a sequence is bounded then it will be definitely have a limit term. Okay, so each has at least one limit point. तो यहाँ पर हमने जो लिया है दैट इज लिमिट पॉइंट, आई एम जस्ट राइटिंग L1 L2, आई एम जस्ट सेइंग से हमने x के लिए हमने L ले लिया, L1 ले लिया है, और एंड सपोज दैट जो दूसरा है उसके लिए लिमिट पॉइंट्स हैं, समझ देना. इस मतलब हमने जो लिमिट पॉइंट्स लिए हैं एक्सएन सीक्वेंस के लिए L1 लिया है और वाईएन सीक्वेंस के लिए L2 लिया है. ओके, सो क्योंकि हमारे पास जो क्लोज इंटरवल होता है वो एक क्लोज सेट होता है, तो क्लोज सेट होगा तो उसके जो लिमिट पॉइंट्स हैं उसी सेट के अंदर बिलोंग करेंगे. इट मींस इंटरवल के अंदर बिलोंग करेंगे. इट मींस दिस L1 एंड L2 विल बिलोंग टू द इंटरवल I. ठीक है, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन अ क्लोज्ड सेट, है ना. So you can also write as a closed interval I is a closed set, and this implies this L1 is belonging to I and this is L2 is also belonging to I. ओके, तो एक चीज और भी होती है सीक्वेंसेस को लेकर कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस बाउंडेड है ना, और बाउंडेड है तो उसका कोई ना कोई लिमिट पॉइंट होगा. अगर उसका कोई लिमिट पॉइंट है तो डेफिनेटली उसके अंदर एक सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी जो उस लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी. ओके, इफ अ सीक्वेंस हैव एन लिमिट पॉइंट then definitely that sequence has a subsequence that converging to that limit point. Okay, तो ऐसा होता है. ठीक है, तो you can just let us construct subsequences for the xn and y. So further you can just have
can write here. Further, since this L1 is a limit point of the sequence xn, limit sequence xn. So there exists a convergent subsequence. Convergent subsequence इसका नाम हम दे रहे हैं एक्स एन के, ऐसे लिखा जाता है सब्सिक्वेंस of this sequence x. Okay, so such that this will be converging to. So this is a convergent sequence. It means x and k will be converging to L1. Okay. Similarly, for the sequence yn, we can able to find. So you can write here. Similarly, there exists a convergent sequence subsequence, sorry. I'm just noting this is y and k like this. You can also use this notation as this notation. Okay, of yn such that this subsequence converges to L2. This y and k is converges to L. Okay, idea. So again, from the equation 1, from we find that क्या हमको मिलेगा 1 से, लेट अस सी कि अगर हम यहाँ पर पॉइंट्स इस तरीके से लिखते हैं तो कि एक्सएन जो है वो हमारे पास कहाँ के पॉइंट है, तुम्हारे पास जो एक्स एन के हैं वो पॉइंट है कहाँ के, एक्स एन के, और वाई एन के हैं दैट पॉइंट फ्रॉम वाई एन के। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेंगे किसको, इक्वेशन 1। तो इसका मतलब ये है कि एफ एक्स एन के एक पॉइंट है उसके लिए माइनस का एफ ऑफ वाई एन के, it will be not less than epsilon when we can have, you can say this is x n k minus the y n k is less than 1 upon n k, है ना। ये पॉइंट जो n के पॉइंट है उसके ऊपर निर्भर करती थी, तो वी कैन नॉट, एंड डेफिनेटली दिस विल बी लेस और इक्वल टू 1 by दिस इज इक्वेशन 2, वी कैन नोट दिस। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, when this k will be tending to 0, tending to infinity, if when k is tending to infinity, this will be tending to this 1 upon k will be tending to 0. When k is tending to infinity, this 1 upon k will be tending to 0. Okay, so from this second inequality, we can easily say this limit of x and k is just equal to y and k, limit of y and k. Okay, so you can just from here you can say thus it means can say the second inequality is saying that, but it shows that this is limit when this is k tending to infinity, this x and k
is just equal to limit k tending to infinity as y. क्यों? क्योंकि this x n k minus का y n k is tending to 0 as this is k tending to infinity. So it means they are limiting have the same. It means that this is L1 is just equal to L. It means we have the sequences. Subsequences means they are sequences as well. So it means we have the sequences in the interval I which are converging to the same limit. We have two different sequences. We are converging to the same limit. So their values, it means their functions value, it means f of x and k, this one and this one. तो इनका जो लिमिट है वो भी सेम पे कन्वर्ज करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा. ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ एफ एक्स एन के माइनस एफ ऑफ वाई एन के इज नॉट लेस देन एप्सिलॉन. ओके, so I'm just writing this in language. So from the first inequality we find, अच्छा अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है, तो 110% अगर दो सीक्वेंसेस हैं और वो सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर रही हैं, तो उनकी जो फंक्शंस की वैल्यूज की लिमिट होगी वो भी सेम पे कन्वर्ज करेगी. ये हमारे पास रिजल्ट होता है इफ दिस एक्शन इज कन्वर्जेंट टू द पॉइंट ए. ठीक है, देन दिस इंप्लाइज एफ एक्शन विल कन्वर्ज टू द पॉइंट कन्वर्ट टू द पॉइंट एफ है. ये होता है हमारे पास डेफिनेशन फॉर द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. बट यहाँ पर वी आर नॉट एबल टू सो लाइक दैट. तो यहाँ पर एक्स एन के या एफ वाई एन के इज कन्वर्जिंग टू द सेम लिमिट एल वन एंड एल टू. तो लेट अस सी कि इनकी जो इमेजेस हैं, इनकी जो फंक्शंस की वैल्यू है वो हमारे पास सेम पे कन्वर्ज करती है या नहीं. यहाँ पर क्लियरली हम देख पा रहे हैं वो नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि एफ एक्स एन के माइनस एफ वाई एन के इज नॉट लेस देन एप्सिलॉन. तो एप्सिलॉन से छोटा नहीं है. तो एप्सिलॉन it means that this will be not tending to 0. We never will be tending to 0. So let us write here. So from the first inequality, from the first inequality, from the first inequality, we find that we find that in case the sequence in the case the sequence of f of x and k, ये दो सीक्वेंसेस बनी हमारे पास है ना, एंड दिस इज द सीक्वेंस f y and k converge. The limits to which they converge are different. तो इनके जो लिमिट्स होंगे वो डिफरेंट होंगी, बट हालांकि इनको सेम लिमिट पे करना चाहिए, है ना. दे कन्वर्ज शुड बी इन द सेम लिमिट. So it means the function is not continuous, but we are already taking the function is continuous. So जो हमारा assumption था, जो supposition था कि the function is not uniformly continuous, वो incorrect हो गया. इसका मतलब function हमारा uniformly continuous है. Okay. So we thus say, thus have, you can say, two sequences this is x and k, sorry, and y and k, both of which converge to
to L1, uh, but the sequences of x and t and f of y and t do not converge to the same limit. Okay. So by a result, this implies function is not continuous. This implies f is not continuous. Not continuous at this point L, है ना? क्योंकि यहाँ पर अगर हम कंटिन्यूटी पॉइंट करते हैं ए पॉइंट पे, तो इसका मतलब सीक्वेंसेस जो ए पे कन्वर्ज कर रही हूँ उनके फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स पे कन्वर्ज करनी चाहिए. तो एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट दिस L1. तो फॉर अदरवाइज two sequences where fx and k, and this is f of y and k would would be would convert to the same point, but ऐसा possible नहीं. So would converge to the same point f of L1. Okay, so thus we arrive to a contradiction, क्योंकि हम पहले ही फंक्शन कॉन्टिन्यूअस लेके चले बट वो डिसकंटिन्यूअस बता दे रहा है बाई फॉर आवर अजम्पशन. So the hypothesis that f is not uniformly continuous. Hypothesis that f is not uniformly continuous on I is false. तो ट्रू क्या है कि फंक्शन हमारा यूसी है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस. तो hence the f is uniformly continuous on I. Okay. So what we did, we have just took two sequences, है ना? उन sequences के हमारे पास लिमिट पॉइंट्स होंगे बिकॉज वो बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं, बाउंडेड लिमिट पॉइंट है, तो उनके अंदर कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस एग्जिस्ट करेंगी. कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस एग्जिस्ट करेंगी तो वो जो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है वो सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर रही हैं, बट उनके जो फंक्शंस की वैल्यू है वो सेम लिमिट पे कन्वर्ज नहीं करेगी. तो इसका मतलब है कि वो कॉन्टिन्यूअस नहीं रहा उस पॉइंट फंक्शन, बट कंटिन्यूअस होना चाहिए था क्योंकि फंक्शन हम ऑलरेडी कंटिन्यूअस लेके चले. तो हमारा जो एजम्पशन था, हमारा जो इम्पॉसिबल वाला जो केस था वो हमारा कंट्राडिक्ट करेगा. इट मीन्स कि फंक्शन हमारे पास जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, है ना? और हम लेके क्या चलेंगे कि वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, तो हमारे चीज को कंट्राडिक्ट कर दे रहा था, फिर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं रह जाएगा. तो इसका मतलब है कि फंक्शन हमारा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस. तो इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन अ क्लोज्ड इंटरवल,
Okay, if a function is continuous in the closed interval, then that function is definitely uniformly continuous in that interval. Okay, so you just remember this theorem and this very beautiful result. And कैसे इसका कंस्ट्रक्टिव प्रूफ है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है प्रकाशन केंद्र की, उसके अंदर डिफरेंट वे से प्रूफ लिखा गया है। तो वो हमें थोड़ा सा लगा कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी होगी, इसलिए मैंने ये एक अलग तरीके से प्रूफ को लिखा है किसी अनदर टेक्स्ट बुक से, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से। तो ये आपको, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए कि कैसे प्रूफ लिखना है, और स्टेप्स बना लीजिए। जब आपका बड़ा प्रूफ हो, आपको थोड़ी सी समझनी, तो उसको अंडरस्टैंड करिए। डू नॉट क्रैम द थिंग। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो प्रैक्टिस करके चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं। तो इन दैट केस यू आर नॉट बिल्डिंग योर मैथमेटिक्स, यू जस्ट रिमेम्बरिंग द थिंग। तो आपको मैथमेटिक्स बिल्ड करने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे हो रही है चीजें। और जब आपको एक प्रोसेस पता चल जाएगा, जब कोई स्टेप्स पता चल जाते हैं, तो आप आसानी से किसी भी थ्योरम या किसी भी रिजल्ट का प्रूफ लिख पाते हैं। कोई भी आंसर आता है तो उसको आंसर कर पाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे कि कौन सा फंक्शन हमारा यूसी है, कौन सा नहीं है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, क्योंकि फिर लेंदी लेक्चर हो जाएगा तो आप लोग देखते नहीं है। फिर बड़ा लेक्चर हो जाता है तो फिर नहीं देखते हैं। ओके, तो इसलिए आप छोटा छोटा करके सीखते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग एज वेल। ओके, थैंक यू सो मच।